Hello friends, let's discuss a very important aspect of chemical kinetics, and that is order of reactions. So in order to define order, first let's see what is the rate law or rate law equation. कि रेट लॉ क्या होता है या रेट लॉ इक्वेशन किसे कहते हैं. So we know about very simple reactions like reaction between H2 and Cl2, H2 gas, Cl2 gas, or we get 2HCl gas, and this reaction can occur at room temperature in the presence of sunlight. Similarly, we have some other reactions. Let's see 2NO, it is a gas, but it is a very less reactive compound. It reacts with 2 hydrogen gas at very high temperature. You can say high temperature. But we get N2 gas and 2H2O. This is again gas here, water vapors. Okay, these are two reactions. Here we have 1 mole of hydrogen, 1 mole of chlorine, and we get 2 mole of HCl gas. We have 2 mole of NO, 2 mole of hydrogen, 1 mole of N2 is obtained, and 2 mole of H2 is obtained. Now, if we generalize all reactions, particularly the binary reactions, reaction between two substances, it's a very simplified form of reaction. ज्यादातर reactions क्या है वो दो compounds के बीच में होती है. बहुत तरह की reactions हैं. So let's represent or let's write a reaction in general between two substances. Let's say A plus BB is equal to product. ये हमारे पास एक रिएक्शन है, राइट. अब इसमें हमारे पास जो कैपिटल ए बी के ये दो रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन होती है. स्मॉल ए इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट, स्मॉल बी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सेकंड रिएक्टेंट. जो स्मॉल हमारे पास ए और बी अल्फाबेट्स हैं वो पहले और दूसरे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहां पर ये जो एक रिएक्शन है, अब इसका जो रेट है, ये रिएक्शन तेज चलती है या इसका जो रेट है वो मीडियम ऑर्डर का है या इसका रेट बहुत ही ज्यादा है, ये रिएक्शन फास्ट है, ये हमें देखना है. तो क्या हमारे पास रेट क्या होता है? चेंज ऑफ ए एंड बी इनटू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एंड बी इनटू product or formation, the rate of formation of product is the rate of reaction. The rate of this reaction, that is rate, R means rate, the speed at which this reaction proceeds, the speed at which A and B convert into the product is equal to K, and let's say A raised power A and that is B raised power B. This is that's equation number 1. इसमें हमारे पास क्या है देखिए प्लीज. We have some numbers here. R is the rate of reaction. R क्या हमारे पास है कि जिस रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है ये आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. क्या आपका ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम. राइट, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में या स्टार्टिंग से एंड तक की जो रिएक्शन है उसका रेट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये रेट को दिखाने का तरीका भी है. अगर हम स्मॉल चेंज लेंगे इसको क्या है, दैट इज dCp ओवर dt भी लिख सकते हैं. एंड Cp इज द स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड राइट इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt. So this is the differential rate equation. According to the law of mass action, the rate of this reaction is equal to, that is R is given by this formula. R is the rate, K is rate constant. A rate which is constant is the rate constant, or क्या बोलते हैं हम specific reaction rate. So this is the rate of reaction under some specific conditions. Now what are those specific conditions? उसमें हमारे पास क्या है कि जब दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर हो, तो हमारे पास क्या है, ये A हम जानते हैं कि A is the active mass of A
द फर्स्ट रिएक्टेंट एंड दिस अगेन बी, क्या हमारे पास क्या है, ये इज द बी इन स्क्वायर ब्रैकेट मींस द एक्टिव मास ऑफ सेकंड रिएक्टेंट बी। ये हमारे पास एक्टिव मास का मतलब क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, क्या होगा, ये इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। सो रेट इज इक्वल टू, द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants each raised to power its coefficient in the balanced chemical equation। बोले यहां पर ये जो नंबर ऑफ मोल है ए और बी, यहां पर ये मोलर कंसेंट्रेशन की पावर बन जाते हैं, और हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इस रिएक्शन का रेट इस फार्मूला से हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कंपाउंड्स की जितनी कंसेंट्रेशन मिली है वो सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। द होल कंसेंट्रेशन, होल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, हम कहेंगे जैसे हमारे पास ये पहला रिएक्टेंट है, इसमें से जो ए कंसेंट्रेशन यहां पर है, इसके ए मोल है, ए मोल में से सिर्फ एक्स मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस थिंग इज डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, ये ऐसा हम प्रैक्टिकली पता करते हैं। कैसे पता करेंगे भाई? प्रैक्टिकली विद हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, कि आउट ऑफ ए ओनली एक्स मोल participate in the reaction. Similarly, for the second reactant B, Y mole participate in the reaction. Then, according to law of mass action, right? The rate is this, but according to chemical kinetics, the rate of reaction R is equal to, let's say, K, the rate constant, A raised power X, and B raised power Y, and let's say this equation 2. So chemical kinetics ये कहती है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है या किसी भी सब्सटेंस का जो रेट है, कोई सब्सटेंस किस रेट से रिएक्ट करेगा वो उसकी उस कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो कंसेंट्रेशन वास्तव में रिएक्शन में हिस्सा लेती है। जो कंसेंट्रेशन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो कौन सी कंसेंट्रेशन है, हम कहेंगे जैसे पहला रिएक्टेंट ए है, इसकी कंसेंट्रेशन है, ये हिस्सा लेगी ना, टोटल कंसेंट्रेशन क्या है, ए, ये मतलब ए माइनस एक्स is a concentration which does not involve in the reaction. Similarly, for the second reactant, that is B minus Y, is the concentration of the second reactant which does not involve in the reaction. तो ये जो concentration है, इनका rate of reaction से कोई लेना देना नहीं है। These concentrations don't contribute towards the speed of reaction or rate of reaction. Only that concentration affects the rate of reaction which actually participate in the reaction. तो पहला जो रिएक्टेंट A है उसके लिए वो वैल्यू हमारे पास क्या है, X है। जो दूसरा रिएक्टेंट B है उसके लिए वैल्यू वो Y वैल्यू है। And this equation which again relates let's say three things here. हमारे पास जो K है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, कब होगा, that is if A is equal to 1 mole per liter, similarly B is equal to 1 mole per liter। दोनों क्या है, दोनों कंसेंट्रेशन क्या है, 1 mole per liter है, then R is equal to K, right? K is known as the rate constant or specific reaction rate or velocity constant और वेलोसिटी कोएफिशिएंट और रेट कोएफिशिएंट, कई नाम है इसके, लेकिन इसको हम क्या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर। देखिए हर, अगर उसमें एक ही रिएक्टेंट है तो ठीक है, रिएक्शन क्या है, एक रिएक्टेंट की है, अगर दो रिएक्टेंट है या 3 है तो हर एक की कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी। उस टाइम जो रेट आएगा वो हमेशा वही आएगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए क्या है, वो एक ऐसा रेट है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और यहां पर ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू दिस K इनटू
A molar concentration of A raised power x, molar concentration of B raised power y is known as rate law. So this equation 2 is known as the rate law or rate law equation, and it is a very important equation in chemical kinetics because it relates three things. Three things means first, that is rate of reaction. पहला हमारे पास क्या है ये rate of reaction है. R is equal to rate of reaction, right? Then concentration of all the reactants, जितने भी reactants हैं 1 2 3, right? All the reactants, and x y, right? These are numbers, x y z. अगर 3 reactants में z बन जाते हैं ना, these are numbers. Okay, so these numbers play a very important role in establishing the actual relationship between the rate and concentration of a reactant or all the reactants. And the sum of these numbers x plus y, the sum of these numbers is known as order of reaction. ये जो संख्याएं हैं हमारे पास यहाँ पर हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. जिसमें क्या है, ये जो हमने यहाँ पर रिएक्शन ली है, यहाँ पर जनरल रिएक्शन, इसका ऑर्डर क्या है? x plus y है. And these are numbers, and these numbers can have, let's say, values from 0 to 3, x y. मतलब कोई वैल्यू 0 से 3 के बीच में. इस तरह से क्या है, इनका जो जोड़ है वो भी क्या है, 0 से 3 के बीच में होता है इन जनरल, राइट? क्योंकि हमारे पास क्या, मान लो ये 0 वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा इनका क्या ऑर्डर 1 आ जाएगा, राइट? अगर हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये ऑर्डर क्या है, 2 आ जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, ऑर्डर क्या है, 3 आ जाएगा, ऑर्डर 3 आ जाएगा. तो इक्वेशन 2 इज नोन एज द रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन, राइट? रेट लॉ इक्वेशन which relates the rate of reaction with concentration of reactants and order of the reaction. This is very important. Order means a number, a mathematical number which actually relates the rate of reaction with the concentration of the reactants. जो एक्चुअल रिलेशनशिप है कि कंसेंट्रेशन के बदलने से रेट कैसे बदलेगा, वो ये नंबर डिसाइड करेंगे, ये संख्याएं डिसाइड करती हैं. कंसेंट्रेशन भी डिसाइड करता है, लेकिन इन संख्याओं का रोल यहाँ पर ज्यादा है. एंड these numbers are known as the order. X क्या है? Order of reaction with respect to A, the first reactant. Y क्या है? Order of reaction with respect to second reactant B, and the overall order of reaction is equal to X plus Y. So order is a mathematical number determined practically, which actually tells us how the rate will change on changing concentration of reactant or reactants. Okay, please. Thanks. Namaskar.